Guys, I'm Sapna, I'm Akshay. and today in this video, we're going to be covering what is actually a G1 test. What do you do after that? What's the process like to getting a driver's license in Canada? And then we're going to talk about our experience today. We went to give the written exam, and at the end of the video, we let you know if we passed or failed. So, yeah, and everything that we did to kind of prepare for this test, we'll let you know in the video now. So, please stay tuned until the very end. यहाँ पे कैसा होता है, फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई जीवन. जीवन एक तरीके से लर्निंग लाइसेंस होता है, प्योर रिटन टेस्ट, यू डोंट हैव टू ड्राइव. जीवन के बाद एक टेस्ट होता है G2, जैसे सेकंड लेवल ऑफ लाइसेंस. इसको ऑब्टेन करने के लिए यू हैव टू गिव अ रोड टेस्ट विद अ इंस्ट्रक्टर. सो वहाँ पे 20-30 मिनट्स का एक रोड टेस्ट होता है, प्री डिफाइंड एक रूट्स होता है जहाँ पे इंस्ट्रक्टर आपको लेके जाता है. देन उसके रिमार्क्स के साथ वो आपको पास या फेल करता है. विद पास यू कैन गेट अ G2 लाइसेंस. देन होता है जी. सो जी इज और टॉप लाइसेंस यू कैन से. So we are just back home after we gave our written exam, which is the G1 level of driving license. And let's discuss our experience in the COVID situation. जीवन बुक करना है तो जीवन के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती. यू कैन जस्ट वॉक इन टू एनी ड्राइविंग सेंटर. सो ड्राइविंग सेंटर कौन कौन से, बिकॉज अभी ड्राइविंग टेस्ट आप दो जगह कंडक्ट कर सकते हो. एक सर्विस ऑन्टेरियो में, बट वो सारे सर्विस ऑन्टेरियो में नहीं होता. यू हैव टू गो एंड चेक कि कौन कौन से सर्विस सेंटर में अलाउड है टू गिव अ रिटन टेस्ट मोस्टली. और मैक्सिमम जो सेंटर्स है वो ड्राइव टेस्ट .ca एक वेबसाइट है. वो सेंटर्स बहुत बड़े होते हैं. देयर आर lot of computers, they have lot of infrastructure. Basically आपका जो wait time होता है at the center वो drastically reduce हो जाता है, and plus the service that you get I think is the best क्योंकि उन्होंने इतने लोगों का driving test लिया होता है. They've seen all the scenarios and everything, so we highly recommend you go there. You have to find your nearest drive test center. उसमें walk in करना रहता है, nothing required. अभी because of COVID, before going you can call there or you can check their website. You have to carry documents, which is your passport, your PR card. If you don't have PR card, take your COPR letter, your driving license back in your country. But the main document is also your DL extract. State से मिलता है. Right, it's validated basically. Just yeah, from your center, your government, it's validated कि आपने इतने साल तक driving की है in India and ये आपकी history है. So we came during the time of COVID, इसीलिए हमारे पास उतना time नहीं था कि हम जाके driving extract निकाल पाएं. And plus, I think the situation back home was very worrisome and the RTOs and all that were not working that well. तो हमारे पास DL extract नहीं था. But they are considerate enough, the people here, the authorities here. So we explained to them that we couldn't get the DL extract, and they were kind enough to actually reduce that time for Akshay. And yeah, he would have had to wait for 12 months before he could give G2. बट उन्होंने वो एक साल उसके जो एक्सपीरियंस था वो काउंट कर लिया, एंड दैट इज़ वाई अब वो एलिजिबल है कि वो सीधा G1 के बाद किसी भी टाइम G2 अवेलेबल स्लॉट्स बुक कर सकते हैं. Guys, let's talk about the process, what you have to do. So तुम ड्राइविंग सेंटर पहुंच जाओ. सो मोस्टली पीपल मैंने देखा कि सजेस्ट करते हैं कि जल्दी चले आओ, ड्राइविंग सेंटर ओपन होने से पहले चले आओ. इट डजंट मेक सेंस. अगर आप पहले भी चाहते हो तो यू विल फाइंड अ क्यू, स्पेशली ऑन वीकेंड्स. सो कभी भी जाओ, बट वो लोग सजेस्ट करते हैं कि ड्राइविंग सेंटर क्लोज होने से 1 घंटे पहले जाना चाहिए, अदरवाइज वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं. सो बेसिकली आपको क्यू में लगना है. Nowadays a queue was like 1 hour. Yeah, you've seen in the clip, it was too long. And plus, क्योंकि COVID के social distancing norms are all being followed, so that is why the queue looked a little longer than it was supposed to be, because everybody was keeping 6 feet का distance between themselves. So yeah, so please reach ahead of time if you can. Yeah, and the process is very smooth, I'll say, because इतने लोग होने के बाद भी there are no chances where you will feel like you are waiting for so long. हमारे आगे almost 40 लोग तो होंगे, कम से कम आगे हमारे, और वो पूरा प्रोसेस 1 hour में हो गया. बहुत सारे मल्टीपल काउंटर्स होते हैं. सो वंस यू रीच एट द गेट, सो वहाँ पे आपको एक टोकन मिलता है, एंड देन यू हैव टू बी इन अ क्यू. वहाँ पे क्यू में लगने के बाद आपका टोकन कॉल होता है. यू हैव टू गो टू अ स्पेसिफिक काउंटर जहाँ पे आपको जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए वो शो करने पड़ते हैं. एंड देन दे आस्क यू फॉर अ आई टेस्ट इन द मशीन वेयर यू विल लुक इनटू इट एंड यू विल रीड द लेटर्स, एंड देन विल चेक अबाउट द which side you can see the lights.
सो इट्स अ क्विक वन. उसके बाद फीस कलेक्ट करते हैं. Fees is $150 we given. So $150 is not a complete fee for G1 test. It's a combined fee. It's a full package you can say. जिसमें से $90 is for your license जो प्रिंट होके आता है your plastic card, and then $15-20 is for your written test, and the $50 is for your G2 test जो आप लोग इसके बाद दोगे अगर आप G1 क्लियर कर सकते हैं तो. So basically, you pay upfront. You pay for your G1 and G2 together, which is approximately $158 for us. And also, they take a picture of you. I think they use it to put it on your license. Right. So after that, they'll mark a computer on your sheet. वहाँ पे 2 टाइप के टेस्ट डिजाइंड है. वन इज फॉर योर रोड रूल्स और सेकंड इज फॉर रोड साइंस. सो बोथ 2020 क्वेश्चंस होते हैं दोनों में, जिसमें आपको 16 पास करना पड़ता है इन एवरी सेक्शन. इफ यू पास्ड इट एवरीथिंग सो यू विल गेट अ लाइसेंस वैलिड फॉर 90 days. द टेम्पररी वन विच इज ऑन पेपर, बट जो आपको एक्चुअली घर पे पोस्ट होगा वो 5 years की वैलिडिटी के साथ आता है. So that was his experience. Akshay has been driving back in India for many years. तो उसको पूरा एक्सपीरियंस है कि कैसे ड्राइविंग होती है, क्या होता है. For me, I don't know how to drive. So this was like the first time ever कि मैंने ड्राइविंग टेस्ट दिया है, even written one. It's MCQs that you will be asked and you have to select the right answer. Basically, that's it. One thing that you can do, at the test is you can skip questions. So what I did was, if I was unsure of a particular question and answer, I would skip it. So what a skip does is it lets you answer that question right at the end. इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर सपोज मुझे 4 आंसर्स नहीं पता है और मैंने एंड तक दे दिया, एंड एवरी टाइम यू आंसर समथिंग इट टेल्स यू वेदर इट इज़ रॉन्ग और राइट. ओके, एंड एट द 16th क्वेश्चन अगर मेरे सारे सही हुए हैं तो मुझे पता है कि मैं तो पास होने वाली हूँ, चाहे मैंने 4 आगे के गलत करिए. तो उस चीज़ में मुझे थोड़ी गारंटी हो जाती है कि हाँ ठीक है, आगे के मैंने गलत कर दिया तो कोई बात नहीं. तो इसीलिए इफ यू नॉट श्योर, स्किप द क्वेश्चन एंड कीप काउंटिंग हाउ मेनी आंसर्स यू हैड गिवन रॉन्ग. ओके, अब जब मेरे पास कोई ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है बैक इन इंडिया, सो आई हैव टू वेट फॉर 12 months बिफोर आई गिव माई G2. तो मैं G1 लेके अपना ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस तो ले सकती हूँ, बट उसके बाद मुझे 12 महीने वेट करना पड़ेगा टू गिव माई G2 टेस्ट. अक्षय पास्ड इन द फर्स्ट गो and he was lucky. He went through. For me, there are 2 tests, as he said, 2 sections. One of them is for the road science and the other one is for the rules. I passed the road science section, but I couldn't get off. Like I had 6 wrongs, whereas you can only do 4 wrong answers. So I had 6. So re-examination can happen on the very same day. So that is a good thing. And you exit that center and you have to queue up again. So ये थोड़ा सा एक दिक्कत वाली बात है, but I think it's better than वापस आना उस सेंटर में. So अगर आप वहाँ हो और अगर आपके पास टाइम है तो आप प्लीज़ दे दीजिए उसी टाइम पे एग्जाम. एंड फिर जब आप काउंटर पे जाते हो, you just tell them you need to give one of the sections again. The cost for re-examination is $16. So you have to pay that cost and then you go in again and give that test. अब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि क्वेश्चन सेम होंगे, तो मुझे याद था कि मैंने क्या गलत किया और मैंने क्या उसके सही आंसर्स किया है, बिकॉज उसी टाइम पे बता देता है कि आपने D मार्क किया है बट आंसर C था. तो आई न्यू दैट, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, बट वो सारे क्वेश्चंस अलग थे. सो I managed to pass that, thankfully. I just had like 3 wrong ones which are allowed, and yeah, I got through and that's done. So guys, it's like, I mean, it's such a big day for me because this is the first ever driving license that I've got. तो आज मेरी लाइफ में आफ्टर सो मेनी ईयर्स बिकमिंग एन एडल्ट, आई गॉट अ ड्राइविंग लाइसेंस. चाहे वो ये वाला हो, कौन सा लाइसेंस है मेरे पास, हाँ, चाहे वो लर्निंग लाइसेंस हो, बट एटलीस्ट आई हैव सम लाइसेंस एंड नाउ आई विल लर्न हाउ टू ड्राइव. So this is the accomplishment of today for me. Let's talk about the how you'll get a study material or something. So if you go online, you will get all of these things. We prepared through an app called G1 Genius. G1 Genius app, वहाँ पे कुछ 3 सेक्शन होते हैं, मतलब 40 क्वेश्चंस के. Not only G1 Genius, there are a lot other apps. हम लोग ने 2 और एप्स डाउनलोड किए थे प्रैक्टिस करने के लिए. सो वहाँ पे आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाता है. एक उनका हैंडबुक आता है एक PDF के फॉर्म में,
which will also get in on online if you just search it. What Akshay means to say is don't take it lightly, and if you don't want to waste that $16, then I'd suggest you prepare well. Any link that's helpful to you guys, we'll leave it in the description for you guys to check. That's our experience, and we've shared as much as we could. So yeah, I hope you've liked the video, and if you have, then please do like, share, and subscribe to our channel, and we'll keep coming up with more content for you guys. Thank you. Bye. Bye.